Good morning, students. In this class, specifically, I want to solve some problems, that is the cross based on heredity. The first one, which is here, like in the book, which in your textbook it has been given the problem, that is the purple flower crossed with white flower. That means the traits is here: color of flowers. The traits, the character is here, color of flower. And one pea plant selected, that is the purple color, and the second pea plant selected for cross, that is the white flower. In the previous class, you did an experiment, a cross that comprised the pure tall and the pure dwarf. Here, based on that, the second one, pure purple flower crossed with the plant having the white flower, and how that will occur. May you would like to say here that it is the one pair of contrasting character, and as it is the one pair of contrasting character, that is why it is also the monohybrid, just like that which we have solved in the last class. Now, how can we will solve it? Purple. For the purple flower, may you give the sign like that PP, and for the white, may you give sign small p, that is the P1 generation. Okay. Now, what is the second step? The second step is the formation of gametes, that is the P1 gametes. P1 gametes. The gamete here formed is P, and here this P. Okay. Now, after crossing this, that is the P1, that is the P1 generation. F1 generation. And in F1 generation, what we have got? 100% plant with purple flower. Here, if you will provided problem, then in the question it will be written which character is the dominant and which character is the recessive. That is why you have no problem to solve this cross. Like here already given that purple flower is the dominant and the white flower is the recessive. Now, we have no problem. First, look here, pure purple flower and pure white flower, the cross between the pure purple flower plant and the pure white flower plant. We have taken
capital P for pure purple flower, and small p for pure white flower. The P1 generation, parental generation, is started from here, and there is a availability of the two types of gametes. From this side there is a P, and this side is small p. From this side capital P, from this side is small p. Now when these two fused, what will happen? The F1 generation. This is the F1 generation, and in F1 generation we have got 100% purple flower. Now after self fertilization, that means the after the self pollination and the self fertilization, may you call this, after selfing, what will happen? After selfing, what will happen? Here from this PP, from this capital P, small p. What is this? This is F1 generation. F1 generation. Now from this F1 generation, first what we will take? We will take the gamete. What are the types of gamete here? Here the gamete capital P and the small p. Here is also the capital P, the small p. That is the two different alleles for this particular gene, which determine, for this particular factor, which determine the color of the flower. There is a two, the capital P, a small p, capital P, a small p. Now what you will write this one? You may write this one, F1 gametes. Okay, F1 gametes. Now after crossing, what will happen? We will get P, capital P, this one. Now we will get capital P, small p, and again we will get capital P, small p, capital P, small p, and lastly we will get small p, small p. Then what will happen? In the last class you have seen the cross between the pure tall pea plant with the pure dwarf pea plant. I have already told you detail how the hybridization done, and what are the alleles, and all these things we have already completed. Today I want to solve only the problem which are given in your book. The first one is here, the purple flower with the white flower, and in this way you will try to solve this. Now what you will get in the F2 generation? In the F2 generation you will get the same result which you have got in the case of the pure tall and pure dwarf plant, between the pure tall and pure dwarf plant. Any monohybrid cross on the pattern of, on the basis of the inheritance factors as deduced by the genes, any cross the monohybrid, you will get the same result. And that is why it is an illustration that you will prove it, that it will also give the result, what the result given in the earlier cross. That means the cross between the pure tall and pure dwarf. So here you have got 75% gene phenotypically, you have got 75% purple, the plant having the purple flowers, 75%. May you write down here the results. May I write here the results? 75% purple and 25% white, having the white flowers. That is the 3:1. What is this? This is the phenotype. And if you will try to understand about the genotypic ratio, then you may come in this way, that you may consider here the
constitution of this, what are the composition of the gene or the alleles here. Here the two alleles, that is the capital P, capital P. Here is also two alleles, capital P, small p. Here are also two alleles, capital P, small p. Here is the allele small p, small p. Then depending upon the this, now you will get here 25% pure purple. That means whom you call pure, where is presence of the similar allele, that is the homozygous. And you have got here 50%, you have got here 50%, that is the hybrid purple. It is purple but hybrid, as it is dominant, purple is dominant over the white. So you have got here allele, that is the this type. This is the second category. And the third one, you have got 25% pure white. I am talking about the genotype, pure white, that is the allele is here PP. So this is the result of genotype. You may try it to solve the problem by with the help of the Punnett square, just like that which you did in the last class. जिस तरह से आपने लास्ट क्लास में देखा और किया, उस तरह से इसको भी आप कर सकते हैं. उसके लिए आप एक इस तरह का चेकर बोर्ड बॉक्स बना लें, है ना. इसमें आप इसको इस तरह से बॉक्स बना लिया आपने. इस बॉक्स में एक तरफ आप रखेंगे मेल गैमेट. आपने देखा होगा मेल गैमेट, सॉरी कैपिटल पी स्मॉल पी, और फीमेल गैमेट भी वही है, कैपिटल पी स्मॉल पी. और इन दोनों को फिर आप ये इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो आपको वही रिजल्ट उपलब्ध होगा. यू विल गेट द सेम रिजल्ट व्हाट यू हैव गॉट हियर इन केस ऑफ द F2 जनरेशन. तो इन दिस वे you may complete this one. Now come to know some more, that is that today I would also like to solve one more problem from the dihybrid cross, where we will consider the two pairs of contrasting characters. We will consider the two pairs of contrasting characters. How? Now look here. From your book, once again, जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसी के आधार पे ये दूसरा जो क्रॉस है वो करेंगे हम लोग. जो आपके बुक में है वो है राउंड यानी कि शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड. ठीक है. और दूसरा जो कैरेक्टर हम लोगों ने लिया है, ट्रेट्स लिया है, वो है कलर ऑफ द सीड. ओके, कलर ऑफ द सीड. शेप ऑफ द सीड में हम लोगों ने राउंड और रिंकल. अगर कोई पौधा प्योर राउंड है और उसके बाद प्योर ब्रीड है रिंकल का, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा. और दूसरा उसी पौधे का शेप जो है, सॉरी शेप तो हो गया सीड का, और कलर जो है सीड का वो होना चाहिए येलो और ग्रीन. ये तो आप 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में इसका लिस्ट आप देख ही चुके हैं. और उसी लिस्ट के अनुसार कैरेक्टर जो है वहाँ पे जो फाइंडिंग्स देखे गए मेंडल्स द्वारा, उस फाइंडिंग्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट मेंडल गॉट, व्हाट ही फाउंड आउट,
and depending upon that results, there are the characters which are always dominant, and which are there are characters which are recessive and they may reappear in the next or the subsequent generations. तो ये आपने देखा कि F1 में भी हम लोगों ने अभी मोनोहाइब्रिड में देखा था कि एलिल्स एक जगह इकट्ठा तो हो गए F1 जनरेशन में, लेकिन फिर वो सिग्रीगेट कर गए जब उनको अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला। मगर यहाँ पे हम लोग जो है दो पेयर्स से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कराने जा रहे हैं, और इसके लिए देखिए तो आप इसको देख लिया आप, येलो और ग्रीन, सॉरी फिर से इसको हम कंप्लीट कर दें, येलो और ग्रीन, राउंड, रिंकल, येलो और ग्रीन, यानी कि शेप ऑफ द सीड तो एक पेयर हो गया कैरेक्टर, अ कलर ऑफ द सीड तो दूसरा पेयर कैरेक्टर हो गया, तो टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इट मीन्स वी विल डू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको किस तरह से करना है मैं एक थोड़ा सा आपको इसको आइडिया दे दूंगा, फिर इसे आप खुद से कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उस बॉक्स को फिर से कंप्लीट करके हम लोग रिजल्ट देख लेंगे। इस बीच में आपके लिए ये एक टास्क रहेगा कि किस तरह से आप इसे करेंगे। आइए देखा जाए। Dihybrid cross, okay, dihybrid cross, that is the cross which involves two pairs of contrasting characters is known as dihybrid cross. Round yellow, cross between round yellow and wrinkled green. अब हम यहाँ पे जो इसको डिनोट करने के लिए कैरेक्टर को जो लेटर यूज़ किया गया, राउंड के लिए कैपिटल R, येलो के लिए कैपिटल Y, और उसके बाद इसी तरह से रिंकल के लिए स्मॉल r, और ग्रीन के लिए स्मॉल y। तो इसे आप क्या कहेंगे? P1 जनरेशन। अब P1 जनरेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा गैमेट का फॉर्मेशन। तो यहाँ से ये देखिए, ये एक R और एक ये Y है ना, फिर ये एक R और ये एक Y, ओके। तो ये देखिए, ये तो ये क्या हो गया? P1 गैमेट्स। अब इस P1 गैमेट्स, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? देखिए रिजल्ट, R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये जो रिजल्ट आया, व्हाट इज दिस? दिस रिजल्ट इज द F1 generation, and the result is, as the round is dominant over wrinkle, as the yellow is dominant over green, then in F1 generation, although we have taken the two pairs of contrasting characters, we will get the result like 100% round yellow, 100%
round yellow. Now after the selfing of this F1 generation, we will get the result of the F2 generation. How that will be done? Let us see here. Let us see here. You have seen here that in the F1 generation we will get 100% round yellow. Now this may you, here I have separated that allele, but may you do in this way also, and it is the better way. Like when you are obtaining the gametes, you can write in this way: capital R, capital Y, capital R, capital Y. Similarly, from here you will get the small r, small y, small r, small y. In this regard, you have seen that when this one, that means the P1 gametes, I have repeated this one as because it is now more easy and comfortable to understand. अब इसी को मैंने यहाँ पे, ये चूँकि मैंने एलील को अलग अलग कर दिया था, यहाँ पे एलील तो अलग, गैमेट बनने के समय ये दो है, एक राउंड का है, एक येलो का है, एक राउंड का है, एक येलो का है, एक रिंकल का है, ग्रीन का है, एक रिंकल का है, ग्रीन का है ना। तो अब इसको देखिए, आप जब इसे क्रॉस करेंगे, जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है किस तरह से आया देख लीजिए, है ना। ये है ना, ये, और इसे आप किसी, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आया ना। तो यही, इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया था, डायरेक्ट दिखा दिया। अब इसको हम क्लियर करके आपको दिखा दिए यहाँ पे। फिर ये दूसरा का भी वही रिजल्ट होगा, इसलिए हम लोग इसी को केवल कंसीडर किए, है ना। F1 जनरेशन में हमको ये मिला, F1 जनरेशन में हमें जो है 100% राउंड येलो मिला। अब इसी को सेल्फिंग करना है तो कैसे करेंगे आप इसको? देखिए इसको, यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसको आप कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जब ये आपस में सेल्फिंग होगा तो आप इस सेल्फिंग में आपको पहले गैमेट निकालना है। देखिए ये दोनों तो एक ही है, सिमिलर है ना, ठीक है। एक का गैमेट निकालेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे करेंगे, ये एक आपको समझने के लिए टेक्निक बताते हैं आपको। इसको इसके साथ ले जाएंगे राउंड, और ये देखिए एक, फिर इसको आप इसके साथ ऐसे क्रॉस कीजिए, सेल्फिंग करा रहे हैं, ओके। ये हो गया सेकंड। फिर आइए यहाँ, ये देखिए स्मॉल आर, कैपिटल वाई को मिलाइए इससे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई को मिला दिया आपने, ये देखिए थर्ड। और फिर इस स्मॉल आर और स्मॉल वाई को मिला दिया आप, अब ये हो गया स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये फोर्थ। तो ये चार तरह के गैमेट male can produce these 4 different types of gametes. The female can also produce these 4 different types of gametes. With the help of a table, you can try to solve, and when we meet together in the next class, we will, if you will try to solve this one and to get the result for the F2 generation. These are the F1 gametes after F1 generation selfing. And due to this selfing, what will happen? These are the gametes, formation of gametes. So that means the F1 gametes. And now after, as you have got F1 gametes, then you now take these F1 gametes for your second, like in this type of table you will make, and in this table
1 2 3 4, just I giving example here, 1 2 3 4. You can write here male, here female. You put the 4 different type of gametes here in these boxes, like here, okay, like capital R, small y, and small r, small y, small r, capital Y, small r, and small y. May you again put these 4 different types of gamete here also for the female, and now you try to solve this problem. When for this specific class, as we have completed all these things, then we have some less burdened in the next classes.